Great. Very good afternoon to all of you. On behalf of Vidarbha Industry Association and LIT Alumni Association, that is LITAA, I, CA Girish Devdar, Chairman MSME Forum VIA, welcome all the potential investors, industrialists, members of the various associations and organizations, and invitees and press to this unique program on possibilities and prospects of CBM, that is coal bed methane in Vidarbha. I especially welcome both the dignitaries from New Delhi, Additional Director General of Hydrocarbons, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi, Dr. Anand Gupta ji, and head of CBM, Mr. Sanjay Lale ji, who happens to be a Nagpurian also in this program. It was Chairman LITAA, Mr. Madhav Labhe ji, and Mr. Pradeep Maheshwari ji, due to whose efforts and due to the blessings from Nitin Gadkari ji, that this program would take place. The purpose of organizing this seminar is Vidarbha region, especially Chandrapur, Yavatmal, Wardha and Nagpur districts are rich with coal deposits. There are great chances of CBM in Vidarbha, and the industries in Vidarbha are excited about this new avenue and opportunity. Recently, the Directorate General of Hydrocarbons has launched special coal bed methane bid round 2022, wherein 16 CBM blocks and measuring about 5,800 square kilometers are on offer. Of these, 2 CBM blocks fall in Vidarbha region, covering an area of around 1,040 square kilometers. The basic objective of today's meeting is to get further details about this, and it will be easier for all those who are interested in participating in the bidding process. With these remarks, I once again welcome you all and request Dr. Mrs. Sugandha Garve, Coordinator VI LITAA, to introduce Dr. Anand Gupta ji. Please, Sugandha, please. Thank you, sir. Dr. Anand Gupta, Additional Director General Development in Directorate General of Hydrocarbons, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, has experience across the entire spectrum of E&P business, including strategy, field development and operations, project implementation, product enhancement, data analytics, operation excellence, contract management, policy and regulations. Graduate in Mechanical Engineering from IIT Roorkee and MTech in Petroleum Engineering from ISM Vidarbha and MBA in Physics. He also holds doctorate in Petroleum Engineering from Pandit Deen Dayal Petroleum University, Gandhinagar. Dr. Anand Gupta is an accomplished petroleum engineer with over 35 years of experience in production of operations, R&D, and corporate functions of ONGC, and has worked in different parts of the country. His previous major assignments include management of field operations, development of technological solutions, developing production enhancement contracts, and various data analytical studies. Currently, Dr. Gupta is working on improving production from different fields in the country and revival of various fields and early monetization of fields. He has worked extensively for discovering small fields and coal bed methane round, which led to award of 32 contract areas under DSF and 4 contract areas under CBM. He has authored more than 10 papers which have already been published in national and international journals
And prior to joining as Additional Director General, he was holding a position of Executive Director in ONGC as Chief Production and Development Directorate. We are certainly honored to have Dr. Anand Gupta with us today. Thank you, madam. I now request President of BIA, Mr. Vishal Agrawal, to welcome Dr. Anand Gupta ji with a floral bouquet. Thank you, sir. I now request Mr. Utkarsh Khopkar, Secretary LITAA, to introduce Mr. Sanjay Lila. Good afternoon, friends. Good afternoon, friends. It's a really honor and a pleasure to introduce Nagpurians before the Nagpurians. So, Sri Sanjay Kashinath Lale has an experience of almost 34 years in the oil industry. As a Nagpurian, he is a native of Nagpur and completed his schooling from Somala School, Ramdas. After completing his graduation from NIT Jaipur, he joined Oil and Natural Gas Corporation at Dehradun in the year 1989. Subsequently, Mr. Lale also has done MBA in International Business from Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi. Sri Lale has 16 years of technical experience in drilling discipline of ONGC, and thereafter he has assigned a techno-commercial job at ONGC Corporate Office in New Delhi. Now, Mr. Lale has a 13 years experience of handling major ONGC contracts. In 2022, Sri Lale has joined Director General of Hydrocarbons under Ministry of Petroleum and Natural Gas and presently assigned as a head of department coal bed methane in India and looks after award of CBM blocks in India and execution of CBM contracts. We welcome you, sir. Thank you, Mr. Utkarsh Khopkar. I now request Chairman LITAA, Mr. Madhav Labeji, to welcome him with a floral bouquet. Thank you, sir. I now request President of BIA, Mr. Vishal Agrawal, to welcome remarks. Good afternoon, everyone. We are privileged with having Nitin Gadkari as the central minister, because of whom we get this opportunity to meet these two dignitaries, Mr. Anand Gupta and Mr. Sanjay Lale. And we are privileged that it is the first time they are offering this coal bed methane blocks to Maharashtra people, and up till now we don't have any block in Maharashtra. So this is the first time, and we are privileged that we have this opportunity to know this new technology. At least for us, it is a new technology. So thank you, sir. Thank you very much. Thank you, President, sir. I now request and hand over the floor to Mr. Sanjay Lalaji for the further proceedings. Sanjay ji. My colleague, Mr. Manpreet, will carry on from there. Good afternoon, everyone. My name is Manpreet and I'm a senior geologist. Director. My name is Manpreet and I'm a senior geologist at Director General of Hydrocarbons. So going ahead, we will now play a short movie which will show the journey of CBM in India and will also show the current offering under special CBM withdrawal 22. Can you see the movie, please? I request all of you to please keep your mobile on silent mode, please. Right. India, a nation emerging as a new growth beacon on the world map. One of the fastest growing G20 economies, India is all set to become the third largest contributor to global GDP by 2040. With a growing economy,
rapid urbanization, and expanding infrastructure, there is an ever-increasing rise in energy demand. The government of India has already announced its ambition to triple the share of natural gas to 15% by 2030 in energy mix. Apart from conventional oil and gas, Indian sedimentary basins possess world's fifth largest coal resources. These coal resources hold huge potential of methane, popularly known as coal bed methane or coal seam gas. Out of the estimated 91 TCF of CBM resource, 90% is yet to be discovered. This provides a significant opportunity for CBM as an alternative and cleaner source of energy. Enthused by the investor-driven policy ecosystem and improved gas pipeline infrastructure, Government of India has launched special CBM bid round 2022, boosting efforts to move towards a gas-based economy. Sixteen CBM blocks are on offer, covering an area of around 6,000 square kilometers. The rising energy demand, growth-oriented policies, and conducive business environment make the CBM operations in India as investor-friendly as never before. Time is opportune, and we invite you to be part of India's CBM exploration and production story. Thank you. I hope that this short movie clip has provided an idea about the CBM history in India and the current offering. Now I would request Dr. Anand Gupta to give a presentation on the gas-less economy. Good afternoon. Thank you very much for invitation by VIA over here. And as we were discussing prior to the meeting over here, that CBM holds a good potential, and some of that you saw over there in the slide. So my presentation as a continuation of that actually will bring out the importance of gas. And as you know, Government of India is giving a lot of trust on gas-based economy. So dignitaries on the dais, all the colleagues, senior officers. Next. So this some of the slides actually I will be showing and presenting to you that how gas is contributing and how it can contribute towards the energy demand and supply to the to the country and moving towards the Atmanirbhar Bharat, which our honorable Prime Minister has told. So as all of you are aware that we are the fifth largest economy in the world, and we are expected to become the third largest by 2030. Our per capita energy consumption is still 1/3 of the global average. So we have high demand, which is required. And we are the first with 40% of working age population aged between 15 and 35 years. As you can see on the right side in the two blocks that our energy consumption will continue to grow much faster than the global demand, because at the global level, the energy demand is stagnating, but our country's demand will continue to grow both in terms of oil and gas compared to the international scenario. So we are the third largest LPG consumer. As you can see, where do we stand in terms of oil and gas sector? So we are the third largest LPG consumer. About 28.5 MMT is required. Currently, more than 99.8% LPG coverage is there in the country, with more than 0.3 billion domestic LPG consumers. The last few years, there has been a lot of work which has been done in terms of LPG supply. We have the third largest CNG vehicle fleet with more than 4,400 stations over there. We are the fourth largest LNG importer. So you can understand the country's LNG which is being imported. And just to share with all of you, at the current level, we are importing about 50% of country's gas requirement. So 85% we are importing oil, and more than 50% of the gas we are importing.
We are the second largest refiner in Asia and fourth overall, about 250 million MMTPA capacity with 23 refineries. We are the second largest oil consumer in the world, 220 MMT consumption next to China. We are the fourth largest auto market. So all this, you can see that, energy sector in terms of oil and gas demand is there. So as you can see that in the next few years also, and as we have been seeing that compared to overall global consumption, our global energy consumption will rise from current levels of 7%, that is 2019, to almost 13 to 14% by 2050. That's what is the estimate. So we will be, that's what has been told, that by 2047 we should be a developed economy, and there our contribution in terms of energy requirement will increase. So over the last few years, government has taken a lot of efforts to unlock both conventional and unconventional oil and gas. So for during the last 25 years, that is from 1997 onwards, we have brought different kind of policies which have helped in moving towards this, unlocking this oil and gas production. And in the 2021, we brought a special CBM bid round with some very special conditions, as I was discussing, which can help in unlocking this resources, that is CBM resources. And as a continuation of that, in 2022, we have also continued with the blocks, as was being mentioned, about 16 blocks. So some of that will be shown in the next few slides, and my colleague Mr. Lale will also be showing on that. So government has tried actually that in order to continue as is happening in the other sectors also, that ease of doing business, we have tried that investor friendly policies are brought. And in order to address the issues at the highest level in the bureaucracy, that ECC has been constituted, that is empowered coordination committee, which is headed by the cabinet secretary, which it ensures that the issues are resolved, and we have worked on the simplification of environment clearance, as was being discussed. That early monetization has also been brought, so that if you monetize early, you get incentivized. There are simplified contract management system. Now we have put the things on self-certification processes. So you can put your information on the portal, and then it gets certified through a self-certified portal. Single window clearances are there. Online contract management systems are there. Then in the systems, it gets reviewed through a Urja Pragati portal, which is at the Ministry of Petroleum level. We have put an upstream India portal at the DGH level, where small operators can put their point and then interaction can take place. Then India Gas Exchange has also been now opened, where gas trading can be done, and if you have got for gas for a short duration, you can do the bidding process through this India Gas Exchange, IGX. So as I was mentioning that now the focus is on the gas-based economy, and the Honorable Prime Minister has already said that the gas should contribute by 15% by 2030. You can see on the right side, it is written over there. And our natural gas consumption is expected to grow by 5-fold by 2050. And in terms of city gas coverage, already 295 GAs are there with the 11 CGD round, and 88% of country's area is covered with 98% of population. So all these CGDs will be requiring the gas for in terms of overall supply. There are almost 1,000 LNG stations which are expected to come in the next 3 years across the Golden Quadrangle in the major highways. And similarly, CNG rollout is also taking place. So this is how the gas production we stand over there. And just to tell you that during the last 2 years, with the commissioning of the East Coast fields, you must have heard through that operator, we have increased the country's gas production by 20% during the last 2 years. So currently we are producing about 96 million meter cube of gas per day, and it is expected to increase to 122 million meter cube of gas per day by 24-25. So this is how the natural gas pipeline and LNG infrastructure looks like. And as is said that we should be one nation and one grid. So all the area should be covered in such a way that you are able to evacuate supply and demand the gas from anywhere to anywhere. So the LNG ports are there at different point of time. And then what we are expecting, that current level of 19,000 kilometer of pipeline should be increased to 36,000 by 2024 as per the current plan what is going on.
And in terms of LNG regasification, it was in 2021 40 MMTA in 6 terminals, is expected to increase to 62 MMTA in 10 terminals. And this National Master Plan of Multimodal Connectivity, that PM Gati Shakti, is already there. So what has been done, that all the data has been put in this Gati Shakti portal. All the ministries, about 26 ministries, all the data has been put. We at Ministry of Petroleum has also put our data on the Gati Shakti portal. So if you can plan an area, you can see what all issues are there. Where are the railway lines passing? Where are the highways? Where is the rivers and all that? How is the land record and all that? And you can do a quick planning actually. So that we, from our side also, we have entered all the data. And once you can put an area, like if you want to see a CBM area, you can mark that area, and based on the layer analysis, you can see how the planning is to be carried out, which earlier was taking substantial time. Now there is a lot of efficiency which has been brought to this Gati Shakti portal. So this is how it is, what I was mentioning, that on the right side, you can see that all the area has now been covered through the CGD network. 88% of the country's area, except part of the Northeast and the Jammu Kashmir, remaining area has been put through the CGD G areas. So this will be requiring, overall gas requirement in different areas. So this is the current status with respect to the overall CBM potential. Currently, there are 8 blocks which are operating, which includes West Bengal 3, Jharkhand 3 blocks, and 2 blocks in Madhya Pradesh. Total acreages which has been given is about 2,400 square kilometer. We are producing about 1.9 million meter cube of gas per day. So as you saw that currently we are producing about 96 million meter cube of gas per day. It is about 2% of the 2% contribution in this gas is by CBM. So we hold these potential is about 280 BCM, and almost $2.2 billion of investment, which is there, has been made in these blocks till September 22. In this, as I was mentioning, in SCBM 2021, we have already awarded 4 more blocks actually. One is in Jharkhand, one is in Chhattisgarh, and 2 are in Madhya Pradesh. And total area about 3,800 square kilometers has been awarded. There is prognosticated resources. Prognosticated is that a resource which is estimated through a broad geological understanding is about 190 BCM. And now in SCBM 2022, which was launched on 10th October 22 at Houston by Honorable Minister of Petroleum and Natural Gas, we are offering 16 blocks within 7 states covering an area of about 5,800 square kilometers. And we have been doing investors meet and interaction in this reference. On 2nd December 22, we had an interaction in Bhopal, Madhya Pradesh, where there are 4 blocks which have been offered. So as you can see that on the right side, total 12 blocks are currently there, 8 producing and 4 awarded in 2021. On the right side, you can see the operators and JV partners who are working in this area. As of now, below top of the line, there are 7 companies which are working either as operator or partner, and 2 new operators got introduced in SCBM 2021, that is Vedanta and Invena Energy. So this is how it is actually in different countries. The CBM is contributing. Australia has done a great job in terms of CBM resource harnessing. China has been doing. India is also trying to put, because if this gas can be supplied in different industries, petchem, power generation, and all that, and US is also doing. So this is how it is actually, that we expect that in the next 3 years or so, from the current levels of 1.9 million meter cube of gas per day, this should increase to 3.5 million meter cube of gas per day. This is possible because as of now, out of 8 blocks, 5 blocks are only operating, and 3 more blocks are going to be put on production, where there were issues related to the pipeline network and evacuation, which have been resolved, and these are moving forward actually. And with this 4 new blocks also, as I was mentioning, that we are trying to fast track the production from these blocks, it will be possible to increase the overall gas production. So just to tell you that, as we were discussing that in the last 2 to 3 years, with the gas price has become quite attractive. And you can see, just we have carried out an analysis. In the table below, you can see that one of the operator has got about $21 per MMBTU of price through the bidding process which has been done. So it essentially is almost
60 rupees per meter cube, and another operator has got about 11.8 dollar per MMBTU. That's about 34 rupees compared to the notified price by PPAC, that is administered price, about $8.57. So now currently it is all total pricing and marketing freedom. You can sell it your gas to anybody wherever you want to sell. So this is overall, and more of this will be addressed by Mr. Lale in his presentation. So you have got, there is a website which is there. These are DGH and some of the hard document my colleague has brought, which has been circulated. So you can see NIO, notice inviting offer, and a model revenue sharing contract. Pre-bid conference will be done, and the news and updated is being given on the DGH website. And this will be through an e-bidding portal. So it's a transparent process and a secured bidding portal where you will be bidding based on the work program, and there is no revenue share. That whatever amount of revenue you generate, you don't have to share anything with the government of India. Only the royalty is to be paid, and that royalty also, if it is you are able to produce ahead of time, then it is a concessional royalty. So thank you very much for this hearing, and we look forward for further interaction based on the today's outcome. Thank you very much. Thank you, sir, for giving the overview of gas-based economy and opportunities under CBM. Now I would request Mr. Sanjay Lale to please come forward and give the presentation on special CBM bid round 2022. Dignitaries on the dais, of the dais, and my dear friends. Good afternoon, and thank you very much for this opportunity. I'll try to be very simple, and मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें बने आप लोगों का. We are offering about 16 blog, but before that, what is coal-bed methane? Methane is the same gas that we use in our kitchen. Same pipeline से आती है, cylinder से liquefy होके आती है. It is the same gas. But the gas that is available in the coal seams, आपने देखा होगा कि coal थोड़ा सा porous होता है. It's not as hard as stone. While कोलिफिकेशन, जिस समय ये कोल बन रहा था, तो उस समय इसमें पानी और ये गैस ट्रैप हुआ है, and it is there in the coal seams. So basically we are interested in this particular gas. It is not conventional gas. Conventional gas जो बॉम्बे हाई में ड्रिलिंग होती है, that is different. It is only in the what we are talking about is the gas that is trapped in the coal seams. Actually, if we are mining the coal from the coal mines, and if we don't produce this gas, it will evaporate to the atmosphere. So once we produce before mining, then it increases the natural gas reserves very substantially. It is a clean fuel. It is trapped along with water. So when we produce water, and along with that, this gas is get extracted. It can be used as auto fuels, fertilizer industry, steel industry, cement industry, bakery, and many more uses. This is a typical schematic of what is the conventional production and CBM. You can see the CBM well. It is very shallow. The normal conventional drilling of oil wells or gas wells, it is much deeper. But the coal bed methane drilling is
quite shallow. It is about 700 to 800 meters of drilling, and the normal conventional drilling is more than 2,000 to 3,000 meters of depth. And Mr. Gupta has already explained that we are already operating about 12 blocks of CBM in India and producing about 1.9 MMSCMD per day. Investment in these blocks have already been done to the tune of $2.1 billion, and we have till date achieved about 5.5 BCM of gas production. In this particular bid round that has been launched by Government of India in 2022, there are 16 blocks on offer in 7 states, 3 sedimentary basins, and the total area on offer is about 58 square kilometers. Of these 16 blocks, 4 blocks are there in Madhya Pradesh of about 1123 square kilometer. In Chhattisgarh, there are 3 blocks, 1086 square kilometer. Jharkhand, we have 1 block, 564 square kilometers. In Maharashtra, we have 2 blocks, 1040 square kilometers. Odisha, 2 blocks, 884 square kilometers. West Bengal, 197 square kilometers. And Telangana, we have 3 blocks, 923 square kilometers. The very beautiful and salient features of this offer is there is absolutely no revenue sharing until windfall gain. It's windfall gain. I'll explain in the later stage, but you can take it as there is absolutely no revenue sharing with the government. Whatever you generate, you just have to give the royalty, and rest you can have your own. We have given complete marketing and pricing freedom. There is no administered pricing. You'll have to sell it into the open market at whatever cost you get. That will be through a transparent bidding process. You can have 100% participation from foreign companies. Earlier, we were facing some issues because coordination with state governments is needed for exploration and production of these blocks. But if we have to deal with 2 state governments for the same block, then it becomes difficult. That is why all these blocks are located in one state only. One more thing we have introduced, that earlier there used to be an experience criteria. You needed to have at least one experience of as an operator, but that has been done away with. Now you don't require any experience of drilling and or exploring in the oil field or in the CBM field. Yeah, so anybody can bid. Yeah. And one more thing, exploration is allowed during the entire contract period. So you can keep on exploring also and even producing throughout the period. So in earlier contracts, actually, there was a limit that up to only a limit you can explore, but it is now open. So you can explore one area, you can produce from that area, you can explore in another area, and you can do a cluster movement actually. There is a single license. पहले होता था कि जब ONGC ड्रिलिंग कर रही है तो उसको कन्वेंशनल ड्रिलिंग ही अलाउड थी. They were not allowed to extract CBM. लेकिन अगर आपको जो भी ब्लॉक मिला है, if there is oil deep below, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं in the same license. So it is not restricted to the coal seam only. आप वहां से आप कर सकते हैं. अगर नीचे ऑयल गैस है तो वो भी आप कर सकते हैं.
और इसमें कोई भी ओवरलैप नहीं है, जो एग्जिस्टिंग कोल ब्लॉक, ऐसा नहीं है कि कोई कोल माइनिंग हो रही है और वहाँ पर हम लोग दे रहे हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो माइंस प्लान्ड एज ऑफ नाउ। जब ये एक्सट्रैक्शन हो जाएगा उसके बाद में फिर माइनिंग, कोल माइनिंग चालू होगा वहां से। तो महाराष्ट्र में वी हैव 2 blocks of 1040 square kilometer area. One is 331 square kilometer and other one is 709 square kilometer. दोनों ब्लॉक्स चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है। जो ब्लॉक नंबर 1 है 331 स्क्वायर किलोमीटर का, ये इसका शेप आप देख सकते हैं कि इस टाइप का शेप है। और इसमें रिसोर्स जो हम लोगों ने एस्टिमेट किया है वो 37 बिलियन क्यूबिक मीटर है। 37 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस इसमें 331 स्क्वायर किलोमीटर में है। The best thing is the nearest gas pipeline is 8 kilometers from this block. तो आप जब भी प्रोड्यूस करेंगे आपको मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप 8 किलोमीटर की पाइपलाइन डालिए और वो नेशनल ग्रिड है, वो आप वहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी आपका सेल एग्रीमेंट कर सकते हैं। गेल की पाइप है ये अलग है। ये वाले जो है वो GSPL की है। So this is the block जो हमने PM गति शक्ति में मैप किया है, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के साथ में ये डिस्प्लेड है। 2 तालुका हैं, एक तो भद्रावती और चंद्रपुर, 2 तालुका में पड़ता है। इतने विलेजेस हैं उस ब्लॉक में। ये उसका मैप है कि जो विलेजेस है वो शो कर रहा है। अराउंड 49 विलेजेस इसमें है इस ब्लॉक में। ये हैबिटेशन है, तो आप देख सकते हैं कि नॉट मच हैबिटेशन इज देयर। तो बहुत ही 3.57 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसमें हैबिटेशन है, अदरवाइज ये ऑलमोस्ट एम्प्टी ही है। These are the rivers and water bodies in the block. It's the advantage here while you are doing initial planning, you can understand that we have to remove the area which is the rivers and all that. area ढूंढना पड़ेगा। LAQ के कम हो exactly. नहीं तो पता चला वो बताया वहाँ पे पानी निकला है। Question here. As per my information, this area is getting overlap county with TATR, Tadoba, Andari Tiger Reserve. If I'm not wrong. हाँ तो वो रिजर्व्स का भी आएगा, फॉरेस्ट आएगा भी, दिखाएंगे वो भी है उसमें, वो भी मैप हो रखा है। That also you can see. वो dense forest है तो शायद नहीं होगा, लेकिन वो फॉरेस्ट है ना आपका, देखो ये रेलवे लाइन है। So these are the national highways, state highways, railway network, BSNL network. ये उस ब्लॉक के आसपास में जो भी हैं। इसमें रेलवे नेटवर्क भी इस ब्लॉक तक जाता है और नियरेस्ट आई थिंक स्टेशन होगा 11 किलोमीटर्स पे नियरेस्ट स्टेशन है। 7.63 किलोमीटर पे गैस पाइपलाइन है, ट्रंक लाइन। This is the forest cover. Okay. तो फॉरेस्ट कवर है इसमें। तो फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर है, लेकिन ये अभी हमने मैप नहीं किया है कि ये डेंस फॉरेस्ट है या ओपन फॉरेस्ट है। This is not reserve forest. हाँ, रिजर्व नहीं। But what he is telling, you can get it checked now. हाँ, लेकिन हम उसको वो जो एरिया है, इसका आइडिया यही है गति शक्ति पे, as I was mentioning, मैप कराने का, that while initially planning you can carry out, you can see that which area you need not to touch because the forest clear and all that. If you can identify area which is comparatively clean actually, then that way you can move forward. And then
once you get, then you can move forward in other areas also. फॉरेस्ट में भी मिलता है बट इट टेक्स लिटिल टाइम. अरे फॉरेस्ट में नहीं होता ऐसा नहीं है, वो परमिशन मिलती है फॉरेस्ट में, इट्स अ प्रोसेस. और यहाँ पर सर वाइल्ड लाइफ है, काफी एक बड़ा एक वाइल्ड Yeah, लाइफ है। और yeah. दूसरा सेकेंडरी ऐसा है कि सर ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये बिडिंग प्रोसेस के पहले ही क्लियर हो जाता है, बिडिंग के पहले सब चीजें क्लियर हो जाती है, तो थोड़ा बिडर को थोड़ा कंफर्ट हो जाता है। नहीं, वो बिडिंग का प्रोसेस तो देखिए यही है, उसके बाद में ही क्लियरेंस मिलेगा. एक्चुअली प्री क्लियर ब्लॉक्स तो अभी नहीं मिलते एक्चुअली in the sense, but we have mapped it on Gati Shakti, that's why, so that you can get a broad idea, because what our experience has been that earlier blocks which were given, those had some challenges actually, because some of them could not get clearances. Now at least you can get an idea that which is my area, which is safe at the first instance, and after that we can move to the other areas actually. और ये जो क्लियरेंसेस है, ये एक पर्टिकुलर एंटिटी को दिए जाएंगे. तो बिफोर हैंड इफ यू डोंट नो हु विल बी द ऑपरेटर, तो वो प्रोजेक्ट ओनर, हाँ, वो तो पॉसिबल है नहीं कि पहले से वो क्लियरेंसेस हो. लेकिन ये होमवर्क हम लोगों ने किया कि इसमें क्या है. 1 million covers sufficient. So this is the other block, 709 स्क्वायर किलोमीटर. इसमें 47 बिलियन क्यूबिक मीटर का गैस एस्टिमेटेड है. और यहाँ से नियरेस्ट जो पाइपलाइन है दैट इज अराउंड 17 किलोमीटर. ये भी चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है, और कोल फील्ड जो वर्धा का एक्सटेंडेड पोर्शन है वहाँ पर, और तेलंगाना से लगते हैं, बट पूरा महाराष्ट्र में ही है ये. तो दिस इज द स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, ओनली वन डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर, and 6 talukas, 68 villages in this block. This is the habitation. Only 2.18 square kilometer habitation है इसमें. Water bodies and rivers, highways. इसमें तो शायद स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे भी इस ब्लॉक के एकदम नजदीक से जा रहा है. नेशनल हाईवे रेलवे नेटवर्क. दिस इज द गैस पाइपलाइन, nearest gas pipeline, 16.88 kilometers. These are the existing coal blocks. It is not coinciding with any of the existing coal blocks. There are no coal blocks as of now. This is the forest cover. सर फॉरेस्ट के साथ मैचिंग नहीं हुआ क्या? जी ये ड्रिलेबल है या नहीं, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में? नहीं, फॉरेस्ट क्लियरेंस जब लेने जाएंगे, एक्चुअली फॉरेस्ट का एक प्रोसेस है, दैट फॉरेस्ट क्लियरेंस व्हेन यू गो देयर सम स्टडीज यू हैव टू कैरी आउट. इट शुड बी बिफोर बिडिंग प्रोसेस, अदरवाइज बिफोर टू वन इट इज एज ही सेड दैट यू इट इज टू बी गिवन टू अ पर्टिकुलर कंपनी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट एक्चुअली, दैट हैज टू बी अप्लाइड. So there is no clearance process which is available through a act to a गवर्नमेंट क्लियरेंस लेकर के नहीं कर सकती, उसमें प्रोसेस नहीं है. ड्रिल कहाँ करें? आइडेंटिफाइड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं, इवन फॉरेस्ट में आपको परमिशन मिलती है. लैंड वो अगर डेंस फॉरेस्ट नहीं है, उनके उनका सा है इसमें. ये बहुत सारी कोल माइंस जो है उसमें भी फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट का क्लियरेंस मिल जाता है. और इसमें एक बात अभी बाद में शायद संजय जी बताएंगे, हम लोगों के दिमाग में माइनिंग बोले तो कोल माइन का आइडिया आ जाता है. ये जो एक वेल ड्रिल होती है उसके लिए 30 मीटर बाय 30 मीटर का एरिया बहुत ज्यादा है. मतलब शायद ये रूम से ट्वाइस ऑफ दिस साइज, ये रूम में जितने हम बैठे हैं ना, इससे डबल एरिया चाहिए. इसके अंदर कम से कम 5 वेल हो सकती है अगर क्लस्टर मिल गए. तो वी हैव टू come out of our shell bore
कोल माइनिंग का दिमाग से आइडिया निकाल जब भी ट्यूबवेल के लिए जितनी जगह लगती है शायद बहुत सारे लोगों के 50 मीटर सॉरी क्या 50 फुट 30 फुट के अंदर भी हो जाती है। सर इंडिया में 2 जगह ऐसी है, इसको मिलाने के लिए एक डिफेंस की जगह और दूसरी फॉरेस्ट की जगह। हाँ, ये जगह पे आप कदम भी नहीं रख सकते, ड्रिल तो छोड़ देना। तो अगर कोई बिडर आता है, सपोज सारी बिड की प्रोसीजर हो चुकी है, देन ही गो टू दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर द क्लियरेंसेस। And I don't know how much time take to now. open forest में तो allowed है, देखिए as he is rightly telling, so we are not doing a mining. And government is already amending the ORD Act actually. So this process will be out of the mining now actually. So mining clearances takes much more time as you are rightly telling in terms of forest clearance. Once this mining word is removed from ORD Act actually, from the forest actually. So it is not under mining actually. So the process of that clearances will be much simpler actually. एक और प्रॉब्लम रहेगा, अगर देखिए इसमें वैसे ही दिख रहा है 60% फॉरेस्ट है, दिख रहा है कि सर सपोजिंग वेल बनाया भी, देन यू हैव टू टेक दैट पाइपलाइन आल्सो। ऐसा तो नहीं है कि हम और एक वेल ही बनाएंगे, you have to connect that pipeline on to the pipeline which is about 16.88 kilometers or either it is 8 kilometers. कहीं भी हम लोग को कनेक्ट करना है, that also has to go to the forest. वो फॉरेस्ट के लिए भी, उसके लिए भी अप्रोचिंग, चाहे फॉरेस्ट लैंड में काम करना है, whether we are working in approaching to forest, लेकिन वो तो फॉरेस्ट ही आ गया ना। लेकिन उसी के लिए वो भी वही बोल रहे हैं कि रास्ता भी बने। नहीं देखिए, मैं आपको जो अभी एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स की बात, नहीं, आपके जो एग्जिस्टिंग वहाँ क्या मैं एग्जिस्टिंग की बताता हूँ। झारखंड में उससे ज्यादा फॉरेस्ट हमारे महाराष्ट्र में नहीं है। इस एरिया का बात हम लोग नहीं, यहाँ वाइल्ड लाइफ टाइगर सेंचुरी है, झारखंड में कोई ऐसा नहीं, लेकिन वहाँ पर एक फॉरेस्ट है और वहाँ पर हमारे ऑलरेडी जो ब्लॉक्स है उसमें ड्रिलिंग चल रही है, क्लियरेंसेस मिलते हैं। आप मध्य प्रदेश में आप देखेंगे रिलायंस का जो अपना प्रोजेक्ट है, 2 ब्लॉक वो कर रहा है, वहां से नियरेस्ट पाइपलाइन उनकी 302 किलोमीटर थी, शेडोल से फुलपुर 302 किलोमीटर उन्होंने पाइपलाइन डाली, तो बीच में फॉरेस्ट नहीं आया होगा, ऐसा तो है नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि उसके क्लियरेंसेस मिलती है। मैं बता दूं, so what we are suggesting actually and what now people are doing as we were discussing inside the room also. Earlier actually the planning was that you take one big area, you drill at all the places and then you connect through a big pipeline network and evacuate, a conventional method what we are doing. Now what we are doing actually, and furthermore as I said, in 2 or 4 of these blocks, in order to expeditiously monetize these, what is being planned is identify one area. It can be a small area, let us say 4 kilometer by 4 kilometer, you drill in that small area actually, and even if each well produces 3 to 4,000 meter cube of gas per day, you collect 15-20,000 meter cube in a small area, make it, and through cascades you can send. So you need to develop the whole pipeline network actually. That technology is much more matured actually, and earlier it was not possible because the price of gas was not that much that it was able to pay that kind of cost which is required for cascading and all that. As I showed, the average gas price is about $10 to $11 now, which people are able to get. So this pays back, and that's what the other companies, 7 operators whom I have showed, they are working actually. So they are able to evacuate even 20-25,000 gas, which earlier we were planning 2-3 लाख gas जब होगी या 4-5 लाख होगी तो हम पूरा नेटवर्क बनाएंगे, एक बड़ा GGS बनाएंगे, उस GGS से लाइन डालेंगे लंबी, उसके बाद प्रोड्यूस करेंगे. So cluster development is now possible. As I was explaining, you can explore, and for exploration B2EC is there, that environment clearance is not required actually. So you can quickly drill, identify area and start producing so that start generating revenue from your resources actually. So that is what is the concept which is now coming up, and it is being used. तो आपको ये नहीं है कि मैं पूरा एरिया ड्रिल करूंगा फिर पूरे एरिया का एक सेंट्रल में बड़ा जीजीएस बनाऊंगा, एक करके होल करके आप ट्रक्स में तो कैस्केड
Directly you make it CNG and then send it और to the और nearest आप place. ये दोनों ब्लॉक्स के पास में आप देखेंगे चंद्रपुर नजदीक है, बल्लारपुर नजदीक है, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, आप उसको टैंकर में आप भर के डायरेक्टली वहां पर जो सिटी ट्रांसपोर्टेबल Yes. In fact, आपको वो फोटो लगाना चाहिए था. We could have shown you. लाइन ही हम लोग दिखाते हैं. ऑलरेडी ऑपरेटर्स इस टाइप का कैस्केड सिस्टम के बेसिस पे कर रहे हैं. एंड पहले एक छरिया में और एसआर वाले ने शुरू किया था. But now at all other places this system is coming up actually. यही लोग कर रहे हैं, मदर डॉक्टर तो आप कर ही रहे हैं। आप लोग भी तो मदर डॉक्टर करते हैं, ECL में तो हम लोग ECL तो पास तो हम they are basically gas manufacturers. Oh, yeah, very good. Yes. So these are the contract timelines. The initial 3 years will be the exploration phase. तो आप जो भी इस जो bidding process होगा और इसमें एक minimum commitment आप देंगे, that will be the evaluation criteria कि हम बहुत ज्यादा वर्क प्रोग्राम बजट देता है. जितना, क्योंकि हम रेवेन्यू शेयरिंग तो अभी नहीं हमने निकाल दिया है, तो इवैल्यूएशन के लिए आप जो ज्यादा काम करने का कमिटमेंट देगा उसको अवार्ड होगा. तो बेसिकली कितना कमिटमेंट है वो फुलफिल उन्होंने करना है ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years. 3 साल में आपने उसको एक्सप्लोर कर लिया, मान लीजिए 10 वेल पूरे ब्लॉक में देख लिए, कोरवेल कर लिए, आपको अंदाजा आ जाएगा. एक्चुअल में अभी हम बोल रहे हैं कि इतना BCM है, लेकिन उस समय जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि इसमें कितना पोटेंशियल है. वो पोटेंशियल के बेस पे आप आगे का प्लान बनाएंगे. तो वो उसके लिए हमने अगले 3 साल दिए हुए हैं कि आप अपना फर्दर जो डेवलपमेंट और प्रोडक्शन फेज में आपको जाना है, तो उसके लिए आपको एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज करनी है, मार्केट सर्वेस करने हैं, कितना मार्केट पोटेंशियल है, हम कहाँ बेच सकते हैं, हमारे कस्टमर्स क्या होंगे, वो उसके बेस पे आप एक ब्रॉड प्लान बनाएंगे फॉर द नेक्स्ट 30 years. और वो वहां से फिर आप, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये मुझे हम ये नहीं कर सकते हैं या फिर इसमें इतना पोटेंशियल नहीं है, आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं लगता है, तो आफ्टर दिस एक्सप्लोरेशन फेज 3 साल के बाद में आप इसको वापस गवर्नमेंट को दे सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टीज. सर इसमें मीथेन के अलावा दूसरा गैस भी होगा, C2 और C1 तो मीथेन नहीं, जनरली तो 5% से ज्यादा CO2 नहीं होता है, 5% से कम है CO2. नहीं नहीं, सिर्फ मीथेन ही थोड़ा CO2 रहेगा. एंट्रैप्ड गैस है. सर ये जो मीथेन प्रोपेन वगैरह नहीं है, सिर्फ मीथेन ही है. ये जो गैस निकालेंगे सेल से, प्रोसेस वो नहीं, वही मैं कह रहा था कि अगर मान लीजिए इस ब्लॉक में आपको CO2 5% तक का लिमिट है. जनरली अभी तक जितने ब्लॉक है उसमें एक आधी कोई ब्लॉक है जहाँ 5% से ज्यादा CO2 आ रहा है, तो उनको CO2 वहां से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा जो CO2 कम करेगा और फिर आप ग्रिड में डाल सकते हैं. वाटर तो निकालना ही. So nowadays you are having a modular systems actually. So modular systems are what actually essentially you get a separator, a small area, and you can put it on this in the central. Suppose you take a 4 kilometer by 4 kilometer area, you put on that and then use it and then supply it actually. And then tomorrow you find that it is not becoming viable or the gas is over, you can remove that. This is how operators are doing. पहले क्या होता था, कन्वेंशनल बनाते थे, बड़ा बड़ा बनाएंगे, एक पूरा GS बनाएंगे जो इनिशियली SR या ONGC या GCL ने किया है. अभी स्मॉल अफोर्डेबल मॉड्यूलर टाइप का सिस्टम है. जैसे हजारीगांव आसाम में उन लोगों ने एक छोटा सा सिस्टम लगा दिया है, वहीं पे करते हैं और मॉड्यूलर सिस्टम गैस प्रोड्यूस किया, सारे इक्विपमेंट एक ट्रेलर पे रख देगा और जहाँ पर भी रखना है वहाँ 2 साल 5 साल. या And what about power? और इसका ये है कि हमने इसमें सेल्फ यूज
अलाउ किया है। जनरेटर लगा आप गैस सारे सारे इक्विपमेंट आप गैस बेस रख सकते हैं। या डीसी से उसमें हाँ, नहीं मतलब डीजी सेट क्यों, आप ये गैस जो प्रोड्यूस करोगे आप उससे पावर जनरेट कर दीजिए, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं अपने यूज के लिए, और उसके बाद ही रॉयल्टी का सिनेरियो आता है। तो जो आप इंटरनल कंजम्पशन इज अलाउड, उसके बाद जो आप सेल करने के लिए दे रहे हैं वो एक्चुअल में प्रोडक्शन माना जाएगा। मतलब इन शॉर्ट आपका जो पावर प्लांट चलाने के लिए जो गैस लगेगा दैट इज फ्री फ्रॉम योर वायर। या यस यस सर H2S है क्या? नहीं H2S होने से तो बहुत डिफिकल्ट है। वही तो नहीं या So initially we produce generally water from the well, 4 to 5 months actually, because water gets evacuated, and after that gas liberation starts taking place. So you have to handle the water also in the drinking actually. We have to put a water treatment plant actually, so as to process that water and dispose it off actually. बेसिकली आपने कभी सुना होगा ना कि कोल माइंस में पानी भर गया, मजदूर मर गए, तो ये वो पानी है जो कोल के साथ में है। और कई बार सुना होगा कि जहरीली गैस से भी लोग मर गए, तो जहरीली गैस कोई नहीं है, यही है, मीथेन है, इसका कोई स्मेल नहीं होता है। और इसीलिए ये कोल माइंस की सेफ्टी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इन्होंने आपस में ये डिसाइड किया कि पहले हम कोल माइनिंग चालू करने से पहले ये गैस को निकालेंगे, जिससे कि ये कंपैरेटिवली सेफर रहे ऑपरेशंस के लिए फॉर कोल माइनिंग, और एक नेशनल रिसोर्स भी हमारे लिए अवेलेबल। ये बिजनेस कितना है आपका टारगेट? बिजनेस कितना है? ये एक प्रेजेंटेशन वेलकम टू दैट प्रेजेंटेशन। कुछ कह रहे हैं somebody? Sir, जी if you allocate as a 1 square kilometer area for exploration, and we explore the area, and then if we want to start the CBM from that particular area, possible. What shall be the land issues in that? We have to procure the complete 1 square kilometer. No. You have to particular land. No. You have to take the land in the area where you want to drill. So as he rightly said, that maybe double of this room will be required for drilling one well. That much land only you have to take for drilling. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं Complete area. मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लीजिए आपने 50 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जहां पर एक्सप्लोरेशन कर दिया, उसमें हर वेल ड्रिल करने में, एक वेल ड्रिल करने में जनरली ऑपरेटर्स 2 एकड़ जमीन लेते हैं, एक्वायर करते हैं, तो लीज पे लेंगे या उसको परचेज कर लेंगे। वो 2 एकड़ जमीन पे ड्रिल होगा, वेल हो जाएगा, जब प्रोड्यूस करने लगेगा तो या तो आप टैंकर से उसको बेचेंगे, या पाइपलाइन अगर वहां से आप डाल सकते हैं, पाइपलाइन एक सेंटर पॉइंट तक, जहां मान लीजिए 10 वेल को कनेक्ट करना है, वो 10 वेल को आपने कनेक्ट कर लिया, एक जगह सारी गैस आ रही है, वहां पर एक कंप्रेसर रहेगा, और वहां से आप या तो पाइपलाइन जो ट्रंक पाइपलाइन में पंप करेंगे या फिर टैंकर में पंप करेंगे। 10 जगह आपको टैंकर नहीं लगाना है, तो आपको सिर्फ वो एरिया ही चाहिए। एक तो पाइपलाइन डालने के लिए तो आपको एक परमिशन चाहिए, वो आप पाइपलाइन डाल दोगे अंडरग्राउंड हो जाएगी, वो उसमें आपको ओनरशिप की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो लोकेशन जो वेल का एरिया है वहां पर आपको या तो लॉन्ग टर्म लीज करना होगा या फिर उसको एक्वायर करना होगा, तो वो बहुत कम एरिया होता है। जब वेल होने तक तो करीब 2 एकड़ के आसपास होता है, उसके बाद में बाकी का एरिया वो छोड़ देते हैं, और जितना इस रूम से डबल एरिया है उतना रखा चाहिए। कौन सा है? Oil well or from As of now, it is under Ministry of Petroleum and Natural Gas. Ministry of Petroleum. No.
It is with CBM is under Ministry of Petroleum. माइंस के बेसमेंट जहाँ उसके अलावा जब आजू बाजू के एरिया से वोट निकाले थे लैंड राइट्स वगैरह होते हैं काम इसमें जो रियल एरिया है उसके अलावा सराउंडिंग से अगर हम गैस निकालेंगे आपको सरफेस का लैंड ही लेना है, सरफेस राइट लेने हैं, सरफेस राइट सरफेस का ही एरिया लैंड लेनी है। नीचे नीचे का तो हम दे रहे हैं ना, जो लाइसेंस हम दे रहे हैं आपको वो नीचे एक्सप्लोर करने के लिए ही सरफेस राइट पर भी साइड कर लेना है नहीं दे रहे हैं जहाँ पर आप अपना इक्विपमेंट लगाएंगे, जहाँ रिग लगाएंगे, जहाँ वेल बनाएंगे, उसका एरिया 1 एकड़ 2 एकड़ जो है जगह है वो आपको या तो लॉन्ग लीज पे लेना है या उसके सर्विस राइट आपके पास में रहने। जब गवर्नमेंट ने आपको ये एरिया दे दिया 300 स्क्वायर किलोमीटर या 400 स्क्वायर किलोमीटर, उस पूरे एरिया में से गैस भी निकालना आपका राइट है। यू गेट दैट राइट। यानी जिस तरह के सवाल आ रहे हैं इसमें हम लोग जो समझ रहे हैं कि एक फॉर एग्जांपल पूरा एरिया 300 स्क्वायर किलोमीटर है, इसमें मानो 70% फॉरेस्ट एरिया है। वो फॉरेस्ट एरिया को ड्रिलिंग करने के बाद में जितना एरिया आपने आइडेंटिफाई किया है, जहाँ पे उस एरिया को आप ओपन करने वाले हैं, उसी फॉरेस्ट एरिया को और जहाँ से आपकी पाइपलाइन जाने वाली है राइट ऑफ वे, उसी का फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत बस यस और ये कम्प्लीटली वन विंडो में कवर कर लिया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। So this is the लोकल जाएगा this is the financial qualifying criteria. नेटवर्थ होना चाहिए कम से कम 2.5 मिलियन US डॉलर्स का बिड करने के लिए फॉर वन सेक्टर इज अराउंड 310 स्क्वायर किलोमीटर्स और उसके बाद सब्सिक्वेंट सेक्टर्स के लिए 0.5 मिलियन डॉलर्स का नेटवर्थ ऐड होता जाएगा। टेक्निकल एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको 6 महीने में, आपको अवार्ड होने के बाद में 6 महीने में आपको एक एक्सपर्ट्स का टीम हायर करना है। So this will require some expertise with the company. So what we have said, anybody can bid, but finally after that 6 months you have to have some team of people. Like it will require a geologist, a safety person, and all that. So that team you should have, so that you are able to carry out operations. सर आपका सबसे छोटा जो ब्लॉक है उसमें काम करने के लिए आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें मिनिमम फाइनेंशियल आ रहा है। आपको बिडिंग पर्पस के लिए कोई नहीं चाहिए। बिडिंग पर्पस हाँ वो बताएंगे। आ रहा है। We have just estimated broadly. तो जो भी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होगा कि आपको अवार्ड किस बेस पे होगा, तो इसका वेटेज है कि आप कितने वहां पर कोर होल ड्रिल करने का कमिटमेंट देते हैं और कितने टेस्ट वेल्स का कमिटमेंट देते हैं। जो ज्यादा कमिटमेंट देगा वो उनको ये ब्लॉक अवार्ड होगा। रॉयल्टी है 10% जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी, सेंटर को कोई रेवेन्यू शेयर है नहीं इसमें। विंडफॉल गेन मैंने कहा था कि वो बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपका रेवेन्यू एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 2.5 बिलियन डॉलर्स तक है, जो बहुत तो आपको कोई भी रेवेन्यू शेयर नहीं करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो 2.5 बिलियन 18,000 crores. 18,000 crores. That is the easier contract. हाँ, तो एक साल में, वो भी एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में इतना अगर आपको रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो नो रेवेन्यू शेयरिंग। उसके बाद में फिर वो स्लैब्स उसमें आ रहे हैं 10% और 30%। ये टोटल एक एक्चुअल केस स्टडी है जो मैं ऑपरेटर का नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये एक्चुअल है और उन्होंने इसमें इतना 652 मिलियन US डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन आप उसमें देखेंगे कि 20 मिलियन ही उन्होंने एक्सप्लोरेशन में, जो 3 साल का जो पीरियड था उस पीरियड में सिर्फ 20 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया। उसके बाद में फिर जो सब्सिक्वेंट पीरियड में, तो हम ये जो बिडिंग प्रोसेस में जो कमिटमेंट ले रहे हैं ये सिर्फ 3 साल का जो इनिशियल उस टाइम का है, अभी तो और कम हो गया, आगे आ रहा है। ये तो उस समय का है, अभी और कम है ये। तो ये एक
हाँ, इसमें एक्चुअली ये तो अगर हम हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग ब्लॉक है उसका हम एवरेज ब्लॉक साइज अगर देखेंगे तो 900 स्क्वायर किलोमीटर है। उसमें एवरेज नंबर ऑफ कोर होल्स जो है वो 5 है और एक कोर होल ड्रिल करने में करीब करीब 0.25 मिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा आता है, करीब 2 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। और टेस्ट वेल एवरेज 2 होते हैं, उसमें उसका खर्चा 0.65 मिलियन यूएस डॉलर्स पड़ता है टेस्ट वेल का अप्रोक्सीमेटली। तो एवरेज मॉनेटरी कमिटमेंट इज अराउंड 2.5 मिलियन यूएस डॉलर्स जो हमने लास्ट ईयर, ये जो लास्ट ईयर हमने जो 20 करोड़ ये हाँ अप्रोक्सीमेटली इतना कमिटमेंट लोगों ने दिया है जिनको ब्लॉक मिले हैं, जो लास्ट ईयर हमने 4 ब्लॉक इस काम के लिए फिजिकल वर्क प्रोग्राम के लिए इसके अलावा कुछ आपको स्टडीज कराने पड़ेंगे, कुछ सर्वे कराने पड़ेंगे और कुछ क्लियरेंसेस वगैरह में सिस्टम में लगेगा। So $4 to $5 million will be a initial, kind of investment which is required before that you can move forward. So these guiding numbers, whatever you are giving, is it shareable after this? So what we are suggesting, we can discuss that based on the today's discussion. If you generate some more interest, then we can have one-to-one discussion. Maybe some of you can come to Delhi also. Our team can sit over there, and then with all your questions, we can try to answer formally, informally, so that we can discuss. Any other technology can give you You have to drill. any other technology? No, you have to drill. No, it is 1,000 meters, 1 kilometer below. Sir, average hole depth 1,000 meters तक नहीं, इससे ज्यादा ही जाएगा। कितना जाएगा? 1500-1600 मीटर। 1500 इसके आप जो कोर होल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वो This gas reserves you have indicated in in place reserves. Recoverable reserve. 30 to 40% होता है। Somewhere near about 50% होता है। तो ये जो 2 ब्लॉक हमारे महाराष्ट्र में ऑफर पे हैं वो 1040 स्क्वायर किलोमीटर के, तो इसमें जो प्रोग्नोस्टिकेटेड टोटल इन प्लेस हम मान रहे हैं कि 84 बिलियन क्यूबिक मीटर का गैस है। और जो हमारा एक्सपीरियंस है और इसमें इसको अगर पूरा एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन टोटल पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखेंगे तो हमें लगता है कि करीब 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा है इसमें टोटल ओवरऑल लग रहा है प्रोड्यूस करेंगे आगे तक लास्ट तक जब प्रोड्यूस करेंगे तो करीब 11,000 करोड़। हाँ, बोथ ब्लॉक्स, लेकिन उसमें से रेवेन्यू जनरेट होगा करीब 90,000 से करीब 1 लाख करोड़ रुपए का। So it is about 1.4 to 1.5 billion dollar investment. तो करीब 9 से 10 गुना आपका रेवेन्यू जनरेशन है, उसमें से सिर्फ रॉयल्टी जाएगा, otherwise rest everything. So government will get about 9,000 crore rupees of royalty. 10%. Yeah, 10% महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलेगा। और ये जो हमने प्राइसेस लिए हैं वो जो आज के डेट में जो एक्चुअल में जो हमारे ब्लॉक्स का जो रेट अभी आ रहा है ये उसके बेसिस पे $15 पर MMBTU के रेट्स हमने दिए हैं। आगे प्रोसेस करने के लिए आपको जो हमारे पास में जो डेटा है वो परचेज करना मैंडेटरी होता है, बहुत नॉमिनल, it's not very costly. बहुत नॉमिनल उसके चार्जेस हैं। कितना है? वो हर पर ब्लॉक है, सारे ब्लॉक मिला दे तो 3,000, मतलब 16 ब्लॉक है। Block average about $2,000. हाँ, सारे ब्लॉक्स Per block average about $200. तो इसमें बिड करने के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सर यहाँ पे नॉन रिफंडेबल टेंडर फीस 75,000 पर ब्लॉक लिखा है। हाँ, जी $10,000 बोल रहा है। नहीं वो that is data. Data is some data, आप बिड करने से पहले हो सकता है कि कंसल्टेंट को देंगे कि इसमें कितना पोटेंशियल, ये तो बोल रहे हैं कि इतना 84 है लेकिन है कि नहीं है, तो आप भी अगर देखना चाहेंगे बिड करने से पहले आपको भी कमिटमेंट देना है ना, तो उसके लिए हमारा डेटा अवेलेबल है, आप इंडिपेंडेंटली भी उसको एनालाइज करना ही पड़ेगा। सर ये प्रेजेंटेशन शेयर कर, हाँ या all everything is shared. सर थोड़ा एक सिंपल सा एक क्वेश्चन जिसपे एज ए लेमन क्वेश्चन, ड्रिल कर रहे हैं अपन को, ड्रिल कर दिया, बहुत बार होता है फेल होना जो बोलते हैं ना, ड्रिल कर लिया फेल हो गया, जैसे पानी का ड्रिल करते हैं पता चलता कि पानी नहीं लगा, फिर अपन दूसरा अटेम्प्ट करते तीसरा अटेम्प्ट,
तो बहुत बार ड्रिल हो जाता है, उतना पानी ही नहीं रहता है, जो एक्सपेक्टेड है उतना पानी नहीं रहता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी प्रैक्टिकल में आती है क्या? फिर आती है तो फिर उसका क्या रखना पड़ता है फिर, और अपनी अपना रिस्क है। नहीं, वो इसीलिए वो इनिशियल जो 3 साल में वो आपका रिस्क है, वो इंक्यूबेशन पीरियड, क्योंकि वो उस समय ही आप देख रहे हैं कि इसमें एक्चुअल में हम जितना पोटेंशियल बोल रहे हैं उससे कम है, उससे ज्यादा है। जब तक ड्रिल नहीं करेंगे वो एक्चुअल में पता नहीं चलेगा। सर इसका इंडिकेशन मिलना शुरू होता है जैसे हमने मान लीजिए 100 मीटर चले जाए तो कुछ जो वहां से सॉइल आती है या पानी आता है उसमें कुछ एनालिसिस तब तक तो नहीं पता चलता। वो एनालिसिस से भी मालूम नहीं पड़ता। कोर लेते हैं सर, कोर जब आप लेते हो, हाँ, कोर इज ए इंडिकेशन। कोर होल मतलब छोटा होल, ठीक है, होल रहता है। वो तो कोर का देगा ना सर, उसमें गैस का नहीं, कोर होल में कोर्स आती है, उसके अंदर गैस ट्रैप होके आता है। आप उसको इवेल्युएट करते हो, इतने में से कितना गैस मिला उससे अंदाजा आ जाता है। मतलब वो एक सैंपल आता है, और मतलब वो पूरा एक सैंपल आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। उसको फिर आप लैब में देखेंगे कि इसमें पोरोसिटी कितना है, इसमें गैस कितना है, तो उससे अंदाजा आता है। लेकिन जब तक आप वहां तक नहीं जाएंगे तब तक तो वो एक्चुअल में नहीं पता चलेगा। इसमें बिड बॉन्ड देना होता है, जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पहले तो बिड बॉन्ड है और उसके बाद में फिर एक बैंक गारंटी है जब भी अवार्ड होता है। नॉन रिफंडेबल टेंडर फी है 75,000 रुपीज पर ब्लॉक। इसमें ई बिडिंग प्रोसेस है, तो आपको एक अकाउंट अपना जनरेट करना होगा हमारे ई बिडिंग पोर्टल पे, और कम्प्लीटली सेफ है ये। आप डेटा अगर परचेज नहीं भी करना चाहते हैं और फिर भी आके सिर्फ व्यू करना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी, लेकिन उसके लिए आपको दिल्ली आके वो हमारे डेटा रूम पे आके वो डेटा व्यू कर सकते हैं। ई टेंडरिंग मोड से होगा। ये हमारा बिडिंग पोर्टल है जो जिसपे ये बिडिंग होगी। पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है, हमारे वेबसाइट पे है, उसका NIO, उसका रेवेन्यू जो कॉन्टेक्ट होगा वो सारा हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। बिडिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड बिडिंग कंसोर्शियम भी में आप कंसोर्शियम में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनको रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन। पैन CIN इक्विवेलेंट बेस्ड रजिस्ट्रेशन और क्लास 3 डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेटवर्क हम देखेंगे, अगर नेटवर्क कम पड़ता है तो आप इक्विवेलेंट अमाउंट का आप बैंक गारंटी भी दे सकते हैं, इनकेस अगर आपका नेटवर्क किसी का कम है और फिर भी बिड करते हैं। और बिड रिवीजन आप लास्ट डे तक आप बिड रिवाइज कर सकते हैं टाइम क्लोज होने पर। तो अभी जो टेंटेटिव टाइमलाइंस है 10 अक्टूबर को ये लॉन्च हुआ था। प्री बिड अभी हमने प्लान की है वैसे 30 जनवरी की, लेकिन क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आई है इसको एक्सटेंड करने के लिए, तो मोस्ट लाइकली हम इसको कुछ समय के लिए एक्सटेंड करेंगे ये प्री बिड। तो प्री बिड में भी आप अपने इसको स्टडी करके अपनी क्वेरीज हमें दे सकते हैं, उसको भी हम रिप्लाई करेंगे। We expect by May, up to May submission. Pre-bid का extension March. Submission will be at May. Make it. Submission. So you got some time to study it. That's all. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, and thank you all of you for such an interactive session. Now we'll go ahead and we'll look into the technical aspects of these blocks. So for that, I would invite Professor Rajiv Upadhyay from IIT ISM Dhanbad. So he will give the presentation. Professor Upadhyay, can you hear me? Good afternoon. Volume थोड़ा बढ़ाइए. Sorry. बोलिए. Can you hear me? Yes, sir. We can. Am I audible? Yeah. थोड़ा volume बढ़ाइए. Okay. So good afternoon all. If you can just give me access for sharing my presentation, it would be good. Sir, you may try now. So, okay. Okay, yes.
So he is from ISM Dhanbad, professor, and they have carried out So, on that CBM potential. Dr. Upadhyay. So they are basically from VIA, Vidarbha Industry Association, and you have to tell little bit in the layman language so that appreciate about this. Yes. Kariye. okay, thanks so much, sir, for my introduction. Yeah, am I audible? Yes, yes, go ahead. Yeah. So my topic of presentation is coal bed methane from prospect to development, and in my presentation I have also key facts related to CBM, and also I have to run you through what work we have been doing in collaboration with DGH and what how much we have achieved so far. Before I start, I just want to highlight that IIT ISM Dhanbad, I'm a faculty from IIT ISM Dhanbad from Department of Petroleum Engineering. And IIT ISM Dhanbad is almost a century-old institution, engineering institute. And when it comes to coal, we are the pioneers. So we also are the only institute where all earth science disciplines and earth science and engineering disciplines are hosted at one place. So that is one distinction we have if we compare ourselves with other institutes. Also, when it comes to CBM, then also we are having an added advantage that we are in the middle of all CBM activities going around, and we also have expertise who have worked considerably in the field of coal bed methane exploration and development. When it comes to experimental capabilities, IIT ISM Dhanbad has majority of the experimental setup available. So we have equipments related to desorption studies, adsorption studies, gas chromatographer. We also have set for hydraulic fracturing. So most of these experimental facilities we are available with at our institute. When it we have expertise in all stages of modeling. So starting from static modeling, seismic interpretation, well log interpretation, static modeling, integration of all the geological and petrophysical data in the model to create a static model, and then in dynamic modeling also. So basically we do everything in reservoir characterization workflow, and we have been demonstrating this by supporting major CBM operators. So we are working closely with Reliance, SR, ONGC. Also we are giving executive development programs to these major CBM operators to enhance their CBM capabilities in their in-house capabilities. So this is what we are experts with. Now, also it is important to highlight that we have developed our own simulator. So one of the major problem that CBM operators face is related to cost of commercial simulators. So CBM is a marginal economics business, and commercial simulators come with huge cost implications. So we have tried to develop our own simulator, and with all advanced features in it, including dual porosity characteristics of CBM reservoir, plus stress dependent geomechanics in the model, and just wanted to show you how it compares with commercial simulators that are available in market, and we it matches very closely with commercial simulators. So what is the key message here is that we get the same level of accuracy with as we get with commercial simulator, but at a very low cost. So this is the advantage of developing in-house inherent capabilities. Just to highlight the thing that the whole world is focusing this emission reduction part now. And we are passing through a stage when world is focusing more and more on achieving the target of net zero. So the chart you see here is
basically gives a detail on how this target of net zero is going to be achieved in coming 30 years. And when we are talking about achieving the goal of net zero, the role of gas becomes very vital. And as the role of gas is becoming vital, means role of CBM is automatically getting vital, because it not only provides us gas, but it is also making our mines safer. So this is the true example of sustainable growth, energy growth. And I would like to highlight one of the statement of Saudi Arabian minister, that stone age didn't end because the world ran out of stone. So I'm not saying that we are going to do away with fossil fuels, but we are in a process of energy transitioning phase, where role of gas is going to become more and more important and vital. So this picture actually shows how a CBM project matures with time. So on x-axis you have time, on y-axis you have maturity of the project, and the curve you see is the maturity curve, which shows how CBM project matures from early exploration stage to development stage. And one of the typical characteristic of this curve is that when you see early time slope of the curve, it is very gentle, and what it means that it actually takes some time for a CBM project to come to the stage of commercialization. This generally case is different from conventional gas project, where this curve is very steep in early stage. Here we don't have that luxury. We have to wait for some time to de-water our well, and only then a peak gas rate is realized. And that is the reason why our projects are usually delayed, because operator has to wait for some time to see the potential of gas a well can give. If I divide this whole curve in two parts, then the whole aim of a operator should be to minimize the first part and to maximize and optimize the second part. We have to and we have to look for any R&D activities where we can minimize the period which we are taking for realizing the gas potential. So we are dewatering the well and allowing the well to reach its peak gas rate, and it is taking time. So the role of R&D is that what should we do to minimize this period? Is there any way we can know the gas potential of a well at a very early stage, and we don't have to wait for a dewatering time? So there is a role of R&D there. In the later part, we have to maximize this period, because we have to maximize the gas recovery from the project. And this is where the role of artificial intelligence comes into picture, because as you all know that when we are working in a CBM project, we have to drill a well maybe at 500 meter or 600 meters apart. So we generally end up with having too many wells in the project. So you can see the cases of SR and Reliance, they are dealing with 300, 400 wells in their field. And when we are dealing with that, then it all boils down to how to manage those number of wells, how to manage production from them, how to optimize production from them. And this is where the role of artificial intelligence that gains momentum. Also, there is role of R&D, because we have to maximize it, and we have to see the scope of maybe CO2 sequestration projects. Can we, because CO2, if we pump, we know that if we pump CO2 in a CBM in coal, what it does, it replaces methane from the absorption sites. So it releases methane and gets CO2 absorbed. So that is a key thing for emission reduction, that is ideal for emission reduction, because we can pump CO2 in a coal and get more methane, and at the same time we will be sequestering our CO2 also. So it is good for environment and also for maximizing the recovery. But for all that, no R&D work has done in India so far. So that has to be done as early as possible.
So what we are doing with DGH currently is we are trying to make a consolidated model for all CBM blocks of India. So the picture you see here, actually it contains all CBM blocks of India. So all the purple color you see is the currently in bidding process 2022 blocks. The green blocks are awarded blocks which are already awarded. And then there is adjoining coal mining areas also. So we have done some joint studies with DGH and also with CMPDI, because when we come to the coal block, CBM blocks, we have very limited data. So what we have tried to achieve in joint study with DGH and CMPDI, that we have adjoining coal mining areas, and we have some data available in coal mining areas also. So if we can get those data and integrate it in our model, that will enhance our understanding of the CBM blocks. So this is what we have done so far, and we are trying to integrate all that in our consolidated model. So basically our workflow, it is maybe getting too much technical, but in nutshell, what we are trying to achieve, we are going to integrate all the data in the model, and using all that data, we are going to analyze all that data, and the result of the analysis is going to be implemented in the model, and that would help us in getting an estimate of gas in place, which we are having. And the same model can then be further used for development studies also, field development studies also. So having a model is very, very important, so that we can study different development scenarios also. Now, so when it comes to Pranhita Godavari Basin, because you are sitting in Nagpur and you have some CBM blocks which are on offer from that area, and I have zoomed into that area from the model, and what you see here is the purple, all the purple blocks are currently on offer, and the blue areas are adjoining coal mining areas. So we have very limited data from the CBM blocks that are on offer, but we have some data from the nearby coal mining areas. So we are trying to integrate all the data which we have in the mining area in the model and extrapolate it into our model, so that we can get some important understanding on the CBM reservoir. So if you can Yeah, so basically the idea of this presentation was that, ISM Dhanbad is working along with us. So if you get interest actually, and then, you have to get some of your assessment done, because finally you have to take decision at your level, you can be in touch with them, as I was mentioning over there. Shall we? Next year. We have some discussions. Okay. Connection has ended with ISM Dhanbad. So what I will do now, so the bidding portal is an electronic bidding portal, and which is maintained by right now is Junction and agency. So just to familiarize you all about the bidding process at that portal, I will show a small video clip. It's a 3-4 minutes presentation, just quickly. Hi everyone. The DG portal has been developed by Junction, the OLB round, PSF round, and the CBM round, all that. Each member needs to have network in proportion to the TI. Sorry. OLB round, PSF round, and the CBM round all are taking place in the same portal. The portal is accessible through web browser. After you access this portal, there are demo videos, user manual already available in the site. I would request you to have a look at it before you start using the portal. If you need any help, there are help desk numbers as well as email ID. Don't feel free to connect us. Hello. Prerequisite of the portal before you use Hello. the portal. What you need is the class TPSC looks like a small token, a small pen drive, which you have to buy, which is your digital identity.
Once you have that DSC purchased, you have administrative right of your computer, because there are few Java components and setup has to be done on your computer to enable DSC. Once you have those two things ready, you are good to go. E-tendering mode is a confidential instrument. That means you have to submit to envelope in a single shot. Portal has been certified and verified by SCQC. Whatever you submit gets encrypted in your computer before data gets transmitted to the server. So data is secure, safe. As a custodian of the data, Nation do not have any capability to decrypt the data. You can decrypt the data or DGH can decrypt the data. The parent subsidiary being supported by the portal, that means company alone, from subsidiary, consortium, you can submit a bid. If subsidiary do not have any name, subsidiary can use parent's name. You have to specify the network and land detail at the time of registration. Updation of the network can be done by the DGH. But parent to register and authorize all subsidiaries to bid. Only if multiple subsidiaries are bidding, all subsidiary and parents both are bidding. Consortiums are also supported. So consortium member needs to register separately. Lead bidder forms the proposed consortium and indicate PI. Each member needs to have network in proportion to the PI. The bidder has to assign priority to the blocks. Priority of one block must be different from the other one. In case of consortium, priority assigned by the lead bidder will apply to all members. Bid revision is allowed till bid submission deadline. Latest bid overrides previous bid. Previous bid can be modified or completely overridden. There are many documents which is part of the portal which we have to upload. So mandatory documents has to be submitted against each requirement in the portal. In case not applicable, for example, the mandatory to self-declaration. To register the bid, you have to have the PAN number or CIN if you are a foreign bidder. Check the availability of the login and register the DSC. Accept terms and conditions. Your registration is complete. During e-bidding, you have to fulfill all the qualification criteria. You have to submit the bid parameters, review your bid, revise your bid, and submit that. Once you submit, evaluation and declaration will be done by the DGH. You have the login option on the right hand side. Once you log in, system will ask for the DSC. You have to select the proper DSC. All blocks in offer with detail will appear in the public domain. Once you click on interest, all the interested blocks will appear in the my tender section. And you can also see the live tenders. You can manage which tender you have responded. So all your conditions can be managed in single place. You can add annual in the network. So you have an option to submit your bids. You can add your members to the consortium. You can declare the percentage of distribution of PI among the members. You also can set up who is the lead bidder who is operating. After doing any document, you have to sign each and every document you upload using the list. Once everything is complete, you will have to click on the confirm button. Once all the checklists are done, then submit. Once you have submitted, you will see an acknowledgement of the system. It ensures that your bid has been accepted by the system. Further, if you need any help, feel free to connect us. Thank you very much. So I hope you found this video a little helpful. All the demos are also listed on our website. The URL of which is listed in that book you got. So I think our sessions were quite interactive. Even then, if you have some questions, we can have those questions. Yeah. Before that, yeah, I think we can have a great round of applause for them for a good presentation. And now request Pratik Maheshwari please come forward and introduce some of them formally so that they are introduced to the public. सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा गुप्ता जी का लाले सर का कि उन्होंने अपने व्यस्त समय से समय निकालकर नागपुर और एक क्यूरियोसिटी थोड़ी कम से कम लोगों में इसके बारे में ये होगी। यहाँ पर गिरीश जी ने, मैंने, लालन जी ने, हम लोगों ने प्रयास करके काफी अच्छे मतलब जो यहाँ के हमारे विदर्भ के इंडस्ट्री से कनेक्टेड लोगों को यहाँ इन्वाइट किया है। और मैं चाहता हूँ कि एक मिनट सब खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे
तो थोड़ा अच्छा रहेगा प्लीज। जैसे मिस्टर कंसल आए हुए हैं अल्ट्राटेक सीमेंट से, प्रोडक्शन के हेड है, मिस्टर तिवारी हैं जो वहां से जियोलॉजी माइनिंग के हेड है, मिस्टर जॉर्ज हैं जो हमारे यहाँ चंद्रपुर के और काफी अच्छा बड़ा उनका ड्रिलिंग का कारोबार है, मिस्टर नायर हैं यहाँ पर, मिस्टर सालवे हैं सोलर इंडस्ट्रीज से। बहुत सारे लोगों को मैं पहचानता नहीं हूँ इसलिए मैं कंपनी से हैं, मोइल से हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सबको थोड़ा अच्छा लगे प्लीज। हमारे यहाँ हमारे एक्स रिलायंस इंडस्ट्री से काफी सीनियर देशमुख जी भी आए हुए हैं, देशमुख सर, संजय देशमुख सर, इनका भी हाइड्रोकार्बन में और इसमें काफी बड़ा इंटरेस्ट है। हाँ, तो प्लीज थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देंगे। I'm Sanjay Kumar. I'm representing Lloyd's Metal Electricity Limited, which has a works in Lagos, and we also have a iron ore mine. हमारे बीच में मिस्टर अहमद महाजन भी हैं जो अभी नागपुर में हमारे जो नया गेट ऑफिस अभी चालू हुआ है, जनरल मैनेजर हैं, और सर का भी इस फील्ड में काफी बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है और हमारे नागपुर एनआईटी से ही है। तो सर को मैंने रिक्वेस्ट की तो सर बोले मैं जरूर आऊंगा, वो आ जाए यहाँ पर। तो गेट का भी हमारे नागपुर में काफी अच्छे। नमस्कार सर। अभी सर जो आपने गैस ग्रिड पाइपलाइन के बारे में जो बताया कि कौन सी सीबीएम अगर निकलती है और कौन से नेशनल गैस ग्रिड पे एनजीजी में हम अटैच कर पाएंगे, उसी का एक पार्ट है एमएनजेपीएल, मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन। तो ये टोटल 1750 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। इसके 3 पार्ट है। पहला पार्ट जो है मुंबई से नागपुर, जो समृद्धि हाईवे के बाजू में ही आ रहा है। समृद्धि हाईवे के कॉरिडोर में हम लोगों ने 3 मीटर का आरओयू लेके उसका काम स्टार्ट किया है। और वो सर नागपुर के लिए अच्छी बात है कि 80% पाइपलाइन कंप्लीट हो चुकी है, 20% ही बाकी है। जो एमएसआरडीसी का कसरा घाट में नासिक के पास में जो काम नहीं हो पाया था, वहीं पे हम काम कर नहीं पाए, अदरवाइज बाकी का काम कंप्लीट हो चुका है सर। तो लेटेस्ट होप कि ये 5-6 महीने में 6 महीने में हम कंप्लीट कर देंगे सर, अप टू नागपुर तक। देन उसका पार्ट बी जो है दैट इज नागपुर, गोंदिया, रायपुर, झारसुगुड़ा। तो झारसुगुड़ा में जाके देन जो अभी बॉम्बे हाई का गैस पाया जो फुलपुर फुलंडी करके जो धोबी दुर्गापुर होते हुए जाता है, वो सर्किट बन के वहां पे कनेक्ट हो जाएगा। तो सेंट्रल इंडिया से कंप्लीट 1700 किलोमीटर पाइपलाइन जाके नेशनल गैस ग्रिड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और तीसरा पार्ट सी जो है दैट इज नागपुर जबलपुर। तो दिस लाइन इज वाया नागपुर, छिंदवाड़ा एंड जबलपुर शिवनी होते हुए। तो इसमें 11 जीए में मैक्सिमम जितने भी सिटीज आए हैं, तो एन एवरेज 19 डिस्ट्रिक्ट कवर हो रहा है टोटल 1750 किलोमीटर पाइपलाइन में। उसमें एक स्पर लाइन है 50 किलोमीटर कोरबा वाली, वो अभी विजिट करके रखी हुई है। तो ये पाइपलाइन वैसा जैसा साहब ने बोला सीबीएम के 2 ब्लॉक है, उसी के साथ साथ ये पाइपलाइन रियली एक समृद्धि के साथ आ रही है, समृद्धि लेके आ सकती है। अगर हम सोचे कि नेचुरल गैस बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में कि जैसा फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर है देन पेट्रोकेमिकल है, ये दोनों इंडस्ट्री के लिए फीडस्टॉक आपके साथ डोर स्टेप पे रेडी है। कभी भी अगर जो भी बिजनेस यहाँ पे बैठे हुए हैं उसके बारे में सोच सकते हैं। और ऐसा कुछ है तो विदर्भ इंडस्ट्री एसोसिएशन को उसके बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम जोनल मार्केटिंग ऑफिस से एक प्रेजेंटेशन भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं। थैंक यू। एक 2 सेंटेंस में सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे ताकि अपने को ये प्रोग्राम टाइम की कंप्लीट। माइक दिया एक इंडस्ट्री से। आप सभी को नमस्कार। मैं सतीश जैन हूँ, महावीर कोल से। कोल में हम डील करते हैं सर। कोल ब्लॉक ऑक्शंस में भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। ऑडिटोरिया का एक एमपी में ब्लॉक ऑक्शन हुआ था, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। लास्ट बिट 54% पे गई थी, हमारा 53.75% का लास्ट बिट था। हम इस सेमिनार में सर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आए, क्योंकि मेहता जी हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमारा नाम यहाँ दिया था। बताया कि बेसिक रिक्वायरमेंट 50 करोड़ रुपए के फंड का अगर किसी के पास अरेंजमेंट है तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन सर आपने जो अभी ब्लॉक्स का डिस्क्रिप्शन दिया है वो इतने बड़े हैं महाराष्ट्र के कि ये 50 करोड़ की पूंजी तो लोग पंपिंग करेंगे, पाइपलाइन निकाले, पानी निकालेंगे और गैस तक पहुंचते पहुंचते उनको गैस मिले ना मिले, किसानों को पानी पक्का मिल जाएगा। तो ये सर जो आप 50 करोड़ का मिनिमम फंड रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, उसमें हमको शंका है कि इसमें कुछ भी होगा।
और ये जिस लेवल के ब्लास्ट का आपने डिस्क्रिप्शन दिया है, हमें लगता नहीं है ये कोई एनएमसी के या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के अलावा हमारे विदर्भा में अभी तक जो विदर्भा का इतिहास है, 500 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट अगर कोई लाता है तो हमारे सम्मानी जो नितिन गडकरी साहब, उन्होंने बोला था कि हम डायस पे उसके चरण स्पर्श करेंगे। जहां ये पोजीशन है सर, वहां कोई क्या हिम्मत करेगा इन ब्लॉक्स में पार्टिसिपेट करने का। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन अनडाउटेडली, लेकिन जो फैक्चुअल पोजीशन है वो वास्तविकता से बहुत परे मुझे दिखती है, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन। मैंने बहुत कुछ सीखा गैस के बारे में। बेसिकली मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, इस फील्ड पर नहीं हूँ, लेकिन कॉमन सेंस से चीजें समझ में आती हैं। तो अंत में सर यही कहूंगा कि आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत एक अच्छी जानकारी हम लोगों को। नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज का तो देखिए ये इशू है, आपका बात सही है कि इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक्सप्लोरेशन पहले होगा, फिर अप्रेजल होगा, फिर डेवलपमेंट होगा, ये इसका साइकिल है एक्चुअली। बट दिस इज हाउ द कंट्रीज हैव जनरेटेड वेल्थ एक्चुअली। नेचुरल रिसोर्सेज से तो वेल्थ ऐसे ही क्रिएट होती है। आई डोंट नो आप लोगों को पता होगा नहीं पता होगा, बट मैं बताता हूँ। गयाना एक सिटी है जिसकी टोटल कंट्री है जिसका टोटल पॉपुलेशन 1 मिलियन है, 1 मिलियन 10 लाख, और हमारे कंट्री का टोटल प्रोडक्शन है आज की तारीख में 6 लाख बैरल पर डे। हमारे से ज्यादा वो कंट्री प्रोड्यूस करेगा अभी 1 मिलियन बैरल पर डे बाई 1 मिलियन पीपल एक्चुअली। लेकिन उसका जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, 21 डीप वाटर वेल ड्राई गए, जिसमें एक वेल का कॉस्ट करीब $100 मिलियन था। तो आज उसमें इतना प्रोड्यूस करने वाले हैं वो लोग। तो नेचुरल रिसोर्स का ये इशू तो है, आपका बात बिल्कुल सही है, बट दिस हाउ पीपल हैव अर्न्ड मनी एंड मेड मनी एक्चुअली। आपको रशिया का भी स्टोरी पता है, तो ये बात सही है। बट व्हाट वी वर ट्राइंग टू टेल, आपका जो एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है टू अंडरस्टैंड द ब्लॉक्स एक्चुअली, दैट इज द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। बट if you will generate and then create the revenue, then it can lead to that kind of cycle, as I said, which we have been discussing, that cluster based development अगर आप कर पाए उसके लिए तो थोड़ा टेक्नोलॉजी भी चाहिए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, और ये चूंकि सब सरफेस गेम है इसलिए इसमें स्किल भी चाहिए, ये आर्ट भी है थोड़ा सा एक्चुअली। तो आपका बात सही है एक्चुअली, बट यू नो रिसोर्स को अगर हार्नेस करना है तो थोड़ा रिस्क तो लगेगा, व्हाट इट इज एक्चुअली। तो इसमें रिस्क एंड रिवार्ड डेफिनेटली है, but those who have earned rewards have also made the risk. I was mentioning before coming into this room to some of the people, in the last 3 years we have opened at least 10-15 fields actually which were closed. आसाम में एक फील्ड था जो 10 साल से बंद पड़ा हुआ था। उस टाइम में जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो $2 पर MMBTU का रेट था, आज $8 पे है। उस टाइम में उन्होंने उसकी वायबिलिटी बनाई, so you can understand how much that is coming. Potential is there. Yeah, and at this point of time, what we were trying to tell, the current business model of government is actually, as I said, there is no revenue sharing. तो ये रिस्क एंड रिवार्ड तो है, इसमें कोई शक नहीं है, और जो थोड़ा रिस्क लेगा उसको ही रिवार्ड मिलेगा, तो एक ये बात है। ज्ञाना की जहां तक बात है तो एक पैरेलल एग्जांपल मैं दूंगा इंडोनेशिया का। कोल में चूंकि मैं डील करता हूँ सर, वहां जिसकी जमीन है वो कोयला निकालता है और बेचता है। आपका सेकंड लार्जेस्ट फॉरेक्स जो जाता है कोल में जाता है इंडिया का पेट्रोलियम के बाद। आप अपने किसानों को अपने खेतों में फसल गेहूं कपास पैदा करने की जगह कोल निकालने की परमिशन दे दीजिए, आप पॉलिसी देखना पड़ेगा कि हमने रेगुलेट कैसे करके रखा है। वो आपका बात सही है, एंड दैट्स व्हाई दिस रेगुलेशन एक्चुअली, दैट्स व्हाट आई सेड, दैट ईज में इसलिए गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू पूरा छोड़ दिया और आपको कुछ नहीं चाहिए, आप करिए, इन्वेस्ट करिएगा। एंड अभी काफी जगह हम ऑयल गैस के लिए एक्सप्लोरेशन के लिए भी गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग। हम इनिशियल एक्सप्लोरेशन करके दे दें जिससे कि लोग उस डेटा को एनालिसिस करके प्लान कर सकें, उस लाइन पे काम हो रहा है, बट ये तो थोड़ा रिस्क है, इसमें कोई इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा कि जो 50 करोड़ की बात हुई है ना, आप जो इनिशियल 3 इयर्स में कोई एक इन्वेस्टमेंट करेंगे वो मैक्सिमम 50 करोड़ मतलब बॉल पार्क फिगर है, हो सकता है 20 करोड़ में भी हो जाए आपका एक्सप्लोरेशन। लेकिन अगर आप एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि यहाँ इतना रिजर्व है तो हम आपको अकेले को बांध के नहीं रखना चाहते हैं, आप आपके पास एस्टेब्लिश्ड रिजर्व्स हैं, तो रिलायंस से लेकर तो ONGC तक कोई भी पार्टनर करना चाहेगा आपको।
तो जरूरी नहीं कि वो आपने अकेले ने ही करना है, ये भी कोई हम आपको वादन भी कर रहे हैं कि आपने ही अकेले ने ही करना है। Yes. Okay. Next, please. Please, last 5 minutes. Yeah. Please. Sir, thank you very much for your nice presentation and awareness regarding the CBM because क्या हो sir, we are from the mining. हम 1982 से अभी तक के ये समय पे मीथेन निकल रहा है, आज तक के निकला नहीं। 1982 से हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, आज भी हमने प्रोफेसर की बात सुनी, RTI से ट्रायल एंड एरर में चालू है, नो R&D डन। तो आपने हमको अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग दिया, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू it is absolutely nice to cooperate with the government for revenue sharing, but simultaneously a single window clearance जो है सर, ये आप आपके बिल्डिंग में डाल दीजिए, because lot of problem आपको नहीं मालूम कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, आपने 1 स्क्वायर किलोमीटर का एक्सप्लोरेशन के लिए दिया, सर मैं पैसा भी दे दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, मुझे क्लियरेंस नहीं मिले, आप कितना भी बोलिए। आप सिंगल बिल्डिंग जब आप करते हो, उसी में सिंगल विंडो क्लियरेंस का आप आपके तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से आप उसमें क्लियर करवाइए। लॉट ऑफ प्रॉब्लम आर देयर। नहीं, वो आपका बात सही है। I have myself personally seen, as I said, that in the last 3 years. So what we have done at DGH, we have opened one cell, which is actually supporting in this lease and license and clearances. Its name is also hydrocarbon clearance cell actually. So हमारे लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो लोग जा करके गवर्नमेंट से सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी PL में इशू थे झारखंड में. So our people have gone and interacted with the government machinery so as to get the clearances done. अभी जो पहले PL मध्य प्रदेश में क्लियरेंस होने में, मैं स्टेट का भी नाम ले सकता हूँ, कभी 8 से 10 महीने लगते थे, अभी उन्होंने 2 महीने में क्लियर किया. You have been seeing that this is a lot of investors meet is taking place by the state government. मैं ये नहीं कह सकता कि it has gone to the deep down, but I feel my person, because I have gone to most of the states also, it has improved the system. It has not solved the problem in totality actually, but it has improved the system. So we are also supporting from our side. That is one of our job at DGH for clearance and facilitation. And as he said, I agree. आपको clearance हम इसलिए नहीं देते because finally clearances are issued to a company's name or to a project opponent actually. तो गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं लेकर के अपने नाम पे नहीं ले सकती, क्योंकि आपको एक एरिया किसी के नाम पे लेना पड़ेगा। तो वो एक्ट है और रूल है। सर, इट इज अ मल्टी मिनिस्ट्रियल टास्क. Yeah, exactly. It is a multi-ministerial task, but the investor is only one. Yeah. How he can Yes. go here and say, so thank you, sir. Thank you. Mr. George. The next. Yeah. Thank you, sir. Sir, being in the mining sector since last 20 years, I very well understood what you said. It's a high risk, high reward game. So it's not like a normal trading. It's a high risk, high reward game. And as far as the bidding process that you made us understand, it's more like it's not a reverse auction or a forward bidding or a reverse bidding. It's more on the commitment that you make on core drilling and the test well drilling. Yes. So the average hole depth will be around 1,600-700 meters, and the size will be HU what I believe. So that उस पे हमको commitment देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, and whoever makes the highest commitment will be winning. Yeah. You're right. It's not like हम ज्यादा royalty वगैरह नहीं revenue sharing. 10% बोलेंगे 3 साल में काम करेंगे तो 7% देना पड़ेगा. पहले रेवेन्यू शेयरिंग पे होता था कि कौन कितना ज्यादा परसेंट रेवेन्यू शेयर करेगा तो उसके अकॉर्ड होता था, लेकिन हमने रेवेन्यू शेयर हटा दिया तो अभी कमिटमेंट के अलावा और कुछ है। और जो लास्ट 4 ब्लॉक्स गए हैं उसमें बहुत कम कमिटमेंट है, मतलब हार्डली $5-6 मिलियन का कमिटमेंट है इन टर्म्स ऑफ। मैंने भी अपना इंटरनल कैलकुलेशन कर लिया, सब कुछ फिगर्स दिए हैं, 0.25 मिलियन नहीं है सर, उससे कहीं ज्यादा लगेगा। नहीं, वो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग एक्चुअली फॉर कोर है, कोर होल। अगर कोर के लिए वेल विल कॉस्ट अबाउट $1 मिलियन, ज्यादा लगेगा। वेल विल कॉस्ट अबाउट $1 मिलियन। आई मीन दैट्स एवरेज व्हाट वी आर गेटिंग। अब किसी नए एरिया में ज्यादा भी। थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली गुड। थैंक यू। Thank you. Anybody else? That's I am Madhu Nair. I have been in this whole department, I can say, since last 20-25 years.
I was lucky that I was associated with the very first coal washery, which has come for this dirty coal. When I say dirty coal, power grid coal, not the coking coal. So the very first washery was established by me in the guidance of the company for whom I was working. Since then, I have been associated with ISM, I have been associated with CFRI, SIMSA, everywhere. So many of the things, whatever they have said, I appreciate, but still things are not very clear. And it may not be for the next 5 years or 10 years, because that is the pace in which it is going. But whatever you have presented today, not as a businessman, as a professional, the entire system, whatever you have presented today, is highly appreciated. As a person, who have been listening to all these things since last 30, 40 years, when I hear today, I make a comparison and saying that it was a highly appreciable proposition, whatever you have given. But, as I requested earlier, I'll be happy if you guys can share me those numbers, whatever the gentleman Sanjay ji was talking about. You don't need to disclose the party whose name you were saying that I will not disclose the name. But in India, we can get the name. That's what it is. You can just give me the numbers, the name I will give. Thank you so much. No, I think thank you. What we are telling actually as we have been doing as a part of facilitation process, what we can do, I was mentioning that those of you who are interested, they can interact on one-to-one basis. It is part of our job actually. So I'm a business development manager on behalf of Government of India, so as to get these blocks bidded I out. would like to have some of your business cards. Yeah. Delhi, I will catch up with you. Yeah, please. So any of you can come, and if you are also interested in visiting any of these blocks, so we can request to the operators also, you can physically also see. I'll actually go there because I'm a professional. Yeah, so I'll actually go and find out so that I can advise somebody. yeah, so that also you can see, no problem on that. But for that, I will have to come to you and your office and meet you. Yeah, so please come. So here you are welcome at any point of time. We can have one-to-one discussion, whatever is possible, that will be shared. No problem on that front actually. And the idea is basically to encourage the industry to bidding, and that's why your role, your association role is very important. That's it brought all of you over here. Our idea is that those who can take interest, and as I said, it's a risk and reward, but finally this is how it moves actually. And you are most welcome at any point of time. I will take it, just and reward. Yeah. So, Somebody will have to come. so we can arrange. Durgapur is the area where all these blocks are located, and we will coordinate with them. You can carry these documents to the table for you. Yeah. Can with you. Yeah. Documents for you. Yeah. And we'll share the visiting card, no problem. Yes, Doctor Sir. Yeah. Yeah. Good afternoon. So today it was really a very impressive presentation. I am Dr. D.G. Garve from Anakan Laboratories. We are working for ONGC, this Gujarat State Petronet and many pipeline projects we have clear, and we provide government for environmental services. We will be definitely coming to your office, sir, because what I could learn earlier, I also worked in central government for 17 years and then I entered into this area. During this bidding process, Government of India have learned a lot, and we have been interacting with many project proponents all across the country, even abroad also. And Government of India have first time entered and presented such type of fantastic business model, which is a win-win situation for project proponent as well as the government also. And it's a transparent process. One pain which was expressed by one of the project proponent who wished to invest 50 crore rupees. If the ministry can provide one window services, as far as grant of clearances are concerned, this will be a value addition. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yes, sir. That is a review. Yes. I'm Salve from Solar Industries. It's a company-based company. We are a mining explosive manufacturer in this part of the world, in Southeast Asia, in China. And we are also in the field of manufacture of defense products.
our interest basically is looking at our ammonium nitrate requirement. We consume a huge quantity of ammonium nitrate, almost the tune of about 4 lakh tons per year. As you know, ammonium nitrate needs one fertilizer, feedstock like CBM or natural gas. So natural gas, of course, again will give us some indication about what availability, what price and all that. CBM is something which we have been looking into this for quite a long time. That's why I indicated about the previous exploration which had taken place in some part of this region. We were tracking that development, but unfortunately, later on, we could not get any feedback on that development. But since this is something which is an eye-opener for us also, we definitely interact with you for getting further inputs about this. Thank you very much. Thank you all for your active participation. I now request Mr. Madhav Labhe, Chairman LITAA, for his concluding remarks and vote of thanks. Madhav Labhe, please. He's the person who brought them here, so he has to now say thank you. आदरणीय डॉक्टर आनंद जी गुप्ता, मेरे मित्र संजय जी लाले, विशाल जी अग्रवाल, गिरी जी देवधर, उत्कर जी खोपकर, डॉक्टर सुंदर गारवे, यहाँ पर उपस्थित विशेष निमंत्रित और मेरे मित्रों, आप सब लोग यहाँ आए, सबसे पहले तो आप सब लोगों को धन्यवाद। उसके साथ साथ आनंद जी और संजय जी विशेष प्रयास कर हमारे विदर्भ के लिए यह एक अपॉर्चुनिटी लाए हैं, इसलिए उन दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अगर इसमें से एक या दोनों ब्लॉक के डेवलपमेंट होता है तो सोचिए 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट विदर्भ में आएगा, 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू, तो विदर्भ की जनता आप दोनों की सदा ऋणी रहेगी सर। मैं खुद 40 साल से इस फील्ड में हूँ। मेरे मित्र अशोक जी यहाँ पर है, जिन्होंने GM ONGC और इन्होंने आपका बोकारो फील्ड जो है वो डेवलप किया हुआ है, वो CBM का है। यहाँ पे दो चीजों का बात हुआ, जो चीजें इन्होंने कही उसके बारे में मुझे कहने का कोई मतलब नहीं, वो आप सब समझ गए हो। हम लोगों ने जो दो चीजें कही उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। पहली बात हम लोगों ने सिर्फ कुछ लोगों ने कही कि फॉरेस्ट का क्लियरेंस ये एक प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस है, तो मैं चाहूंगा सर इसमें से डेंस फॉरेस्ट कितना है और उसके लिए जैसा कि एक सुझाव आया कि आप एक जेनरिक क्लियरेंस लेके रखिए कि ये ब्लॉक में अगर कोई ड्रिल करता है तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक अंडरस्टैंडिंग आपकी और मिनिस्ट्री की जल्दी हो सकती है, बजाय कि जो कोई लेगा और उसके बाद वो चक्कर मारेगा। तो मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा कि आप इसके बारे में सोचिए। दूसरा कहा गया सिंगल विंडो का, उसके बारे में भी आप जरूर सोचिएगा। जैसे नायब साहब ने कहा कि अगर सिंगल विंडो होती है तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि जो पैसा डाल रहा है 50 करोड़ वो नहीं जाने चाहेगा कि 50 करोड़ डालने के बाद और 50 जगह पे मैं जाऊं, है ना। हमारे यहाँ मंदिर बहुत है पर हम चाहते हैं कि एक ही मंदिर और एक भगवान की हम पूजा करें। तो वंस अगेन आई थैंक ऑल ऑफ यू, और विशेषकर प्रदीप जी माहेश्वरी और गिरीश जी देवधर, इन लोगों का खास धन्यवाद कि जिन्होंने हमारे कहने से हमने सोचा, जब मेरी संजय जी से बात हुई 1.5-2 महीने पहले, संजय जी ने कहा कि भाई विदर्भ के लिए ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है और आपको सुनकर अचरज लगेगा कि इस तरह के प्रेजेंटेशंस ये लोग जाके अमेरिका, यूरोप में देते हैं, वो नागपुर में आए हमारे लिए और विशेष करके हमारे सामने बैठ के इस तरह का प्रेजेंटेशन दिया है। जहां वो प्रेजेंटेशन करते हैं वहां इस कुर्सी पे बैठने की भी कीमत होती है, प्रेजेंटेशन करने के लिए कीमत होती है। तो हम लोग अगेन इनका धन्यवाद देंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी का भी धन्यवाद, उनकी वजह से नितिन जी की प्रेरणा से ये हो रहा है।
तो नितिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया और प्रेस के लोग जो हमारे यहाँ आए हुए हैं उन लोगों का विशेष धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इसको वो पब्लिसिटी दे ताकि विदर्भ में क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये आप लोगों को बता सकते हैं। और मैं चाहूंगा आप लोग भी, जरूरी नहीं है कि हम में से यहाँ बैठा हो हर कोई 50 करोड़ 100 करोड़ शुरू में डालने वाला हो, पर जैसे संजय जी ने कहा कि 50-100 करोड़ रुपए से हम शुरुआत कर सकते हैं। और जब आप चल पड़ते हो तो आपके साथ मदद अपने आप आती है, क्योंकि अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर को ये पता चल गया कि इन्होंने प्रिलिमिनरी वर्क कर लिया है, तो आज भी इन्वेस्टर के लिए ऑयल एंड गैस जो है वो मोस्ट इंटरेस्टिंग फील्ड है। और ऑयल एंड गैस में जो पैसा है वो मैंने 40 साल देखा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ इसमें इतना पैसा है कि आप बिल्कुल ये 3 पत्ती आप जरूर खेलिएगा। रही बात, किसी ने यहाँ कहा कि भाई ये मॉर्टेलिटी का क्या रेशियो होता है, मतलब कितने वेल ड्रिल्स करने के बाद उन्हें मिलने के चांसेस है। एक्सप्लोरेशन में सर 20% सक्सेस रेशियो रहता है, मतलब 10 to 20%। आप 8-10 वेल करोगे तो शायद 1 आध वेल मिलेगी एक्सप्लोरेशन। डेवलपमेंट में यही रेशियो जाके 30-40-50%। तो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस दोगे वैसे वैसे बढ़ेगा। फिर से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ, और किसी को धन्यवाद देना मेरा छूट गया हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, और सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। एक आपको कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी अपने पास इन लोगों को जाना है और 10 मिनट अपने पास है जिसके ये बात। Just to add on that forest thing, तो अगर आप गूगल मैप पर इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको पूरा ग्रीनी दिखेगा। इट डज नॉट मीन कि पूरे, बेटा आप इस पे बोलिए तो it does not mean कि पूरे इंडिया में फॉरेस्ट है, no one can work there. So the same way what we have done, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट का एक पोर्टल है that is called DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सो हमने अपने ब्लॉक्स को उन सिस्टम पे रन किया। इनफैक्ट जब आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में when you submit the application, they also run your application on that particular software. एंड उसमें उन्होंने एल्गोरिथम डिफाइन कर रखे हैं डिवाइडिंग द ब्लॉक्स की 3 किलोमीटर एरिया 2 किलोमीटर के ग्रिड बना करके उन्होंने पूरा एल्गोरिथम बना रखा है, और वो रिजल्ट देता है आपको वो सॉफ्टवेयर। तो हमने जब उस सॉफ्टवेयर पे अपने दोनों ब्लॉक्स को रन किया था तो इट वाज नॉट वायोलेटिंग। उनके 2 कैटेगरी होती है, वायोलेट नॉन वायोलेट। इट वाज नॉन वायोलेटिंग, इट वाज ओके टू वर्क। सो अगर आप उनसे काम करते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि आपको नहीं देगा, उनके सिस्टम में भी इट इज शोइंग कि इज ओके टू वर्क। क्लियरेंस लेना पड़ेगा, काम कर सकते हैं। बाकी ग्राउंड वर्क तो होता ही है, बट ऑन प्राइमरी फेसिया दिस इज ओके टू वर्क। डेंस फॉरेस्ट रिजर्व उसमें बेटा ये भी है क्या कौन सा डेंस है कौन सा? हाँ। यस, अभी आप नॉन वायलेटिंग बोल रहे थे उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, बिकॉज़ दैट्स द ओनली डेंजर डेफिनेशन। नॉन वायलेटिंग है तो यू कैन नॉट। आप क्या कह रहे थे? इसमें फॉरेस्ट के बारे में कुछ जानकारी जो लोगों की आई है वो थोड़ा सा देना चाहूंगा। फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज। वन पार्ट रिजर्व फॉरेस्ट लाइक दिस। तो इसमें जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ब्लॉक को आइडेंटिफाई किया है तो जैसी माइन की लीज देते हैं, लीज मिलने के बाद में आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलना ही है। तो उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं लार्ज इंडस्ट्रीज। तो वो सोल्यूशन भी आपके पास नागपुर में अवेलेबल है। Once again, thank you, Anand ji, and thank you all for being here. The meeting is adjourned. Thanks.